Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 18th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about some cabinet approvals shared by Prime Minister Narendra Modi, that Union Cabinet. Then we will be talking about a helpline number that has been launched for the waste pickers. Then next thing we are talking about Gujarat. They have launched India's first tribal genome sequencing project to tackle the inherited diseases. Then Dharmendra Pradhan, our education minister, has inaugurated India campus of University of Southampton in Gurugram. All these things and many more will be discussed here. So stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, which is very beneficial for the competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs, students. First, we are talking about Union Cabinet that is chaired by Prime Minister Narendra Modi, and we will be looking at some of the cabinet approvals. First is Union Cabinet approved the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana for a period of 6 years. This is important. Then this scheme has been launched with an outlay of 24,000 crore rupees and will be implemented through the merged 36 existing schemes across 11 departments for a period of 6 years, that is from 25-26 to 31-32. Second is CCEA has approved the investment exemption for NLCIL to accelerate the growth of renewable energy. This exemption, it enables the NLCIL to invest 7,000 crore rupees in their wholly owned subsidiary NLC India Renewables Limited without requiring prior approval from the government under the existing delegation of power. Third, CCE has also approved the enhanced delegation of the power to NTPC Limited for investing up to 20,000 crore rupees in NTPC Green Energy Limited and its other subsidiaries to set up the renewable energy capacity. And fourth, Union Cabinet passes the resolution hailing Group Captain Subhanshu Shukla. He was the first individual or first Indian to go to the International Space Station in this Axiom 4 mission. This was a 18-day long mission, right? And Dragon capsule using SpaceX Falcon 9 rocket took it into the International Space Station. So these are some of the 4 approvals that you need to remember. Next, Union Minister of State B.L. Verma has launched a helpline number for waste pickers on the occasion of the Namaste Day observed in Lucknow. Lucknow is where? Lucknow is in UP, right? And this helpline number 14473 is for the waste pickers. Right? What is this Namaste Day? It is your National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem Day that is in Lucknow, UP, correct? And BL Verma, he has launched this helpline number 14473. He has also distributed personal protective equipments that are your PP kits with Ayushman cards to sewer and septic tank workers and waste pickers. Also, while addressing the program here, Minister of State BL Verma, he highlighted that this Namaste Yojana is profiling of 85,067 sewer septic tank workers and has been done so far and distributed these PP kits to almost 45,000 sewer workers, while Ayushman cards has been distributed to more than 40,000 individuals. He has also launched an artificial reality, virtual reality training module for the safety of these sewage workers, septic tank workers, and also apart from that, safety equipment was also distributed during this emergency response sanitation unit work, correct? So take a note of this, and the number is important, 14473. Next is Gujarat has launched India's first tribal genome sequencing project to tackle the inherited disease. Very important, students, right? The project here, correct, is basically India's first ever tribal genome sequencing project. This was held during an event in Gandhinagar, Gujarat, and the aim here is basically to create a genetic database that will help us to understand and tackle the inherited diseases among the tribal communities, right, that they have inherited from their forefathers. The project will develop a database. It will develop a
database. This will enable early detection, better treatment of the inherited diseases such as your sickle cell anemia, thalassemia, and other certain cancers. Under this initiative, more than 2,000 individuals from more than 20 tribal communities across 17 districts of Gujarat have undergone the genome sequencing. And this project will ensure 50% participation from women and use the trio-based approach involving parents and one child to study the hereditary patterns, because in children, the diseases, this inherited disease will be transmitted from the parents to the children. Right? Who is the Chief Minister of Gujarat? Bhupendra Patel. Governor Acharya Devrat. And Gujarat has launched this India's first tribal genome sequencing project. Moving on, students. Next is our Education Minister Dharmendra Pradhan has inaugurated India campus of the University of Southampton in Gurugram. Take a note of this, students. This is important. UK-based University of Southampton. They have opened their first foreign university campus in India under UGC's guideline, and it has opened where? In Gurugram, Haryana, right? And this campus, it is situated within the International Tech Park, right? And it will start their operation in August 2025. This campus will be offering 6 degree programs that are including your 4 undergraduate programs such as your Bachelor of Science in Business Management, Accounting and Finance, Computer Science, Economics, and 2 postgraduate courses, that is Master of Science in Finance and International Management. Next, India and Kuwait, they have signed an MOU to boost the flight capacity. I repeat, these two countries, they have signed a revised MOU to expand their bilateral flying rights, increasing weekly set quota by 50% from 12,000 to 18,000 seats from each side. As a part of this revised agreement, Indian Airlines will get priority access to landing and parking slots in Kuwait airport also. And this is the first capacity enhancement since 2006, when weekly capacity enhancement of each sites were raised from 8,300 to 12,000. Currently, Indian airlines such as your Indian Air Express, Akasa Air, Indigo, they operate nearly 40 flights daily between India and Kuwait. Next is international affairs. OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development, and Food and Agriculture Organization. So OECD, FAO, these two organizations, they have released a joint edition of the 21st edition of the OECD FAO Agriculture Outlook from 2025 to 2034. This report has been released, and as per the report, by 2034, only 40% of the global cereal production will be consumed directly by humans, while 33, let me show you the data exactly. Only 40% of the global cereal production will be consumed directly by humans, while 33% will be used for animal feed and 27% for the biofuel and industrial uses. The report forecasts that the global biofuel demand will grow at an average of 0.9% annually by 2034, and India along with Brazil and Indonesia, they will be the key drivers of this accelerated growth due to the policy support, energy security goals, and rising energy demand in the emerging economies. Because India is a global developing country, right? We will be needing all the source of energy that we can gather, and here we will be seeing that India, Brazil, and Indonesia, they together will be boosting or accelerating the demand of this biofuel. Next, if we see about this global biofuel demand drivers, you can see these are the countries that we are talking about, and the report, it presents a 10-year forward-looking assessment of the global agriculture trends, highlighting a shift in cereal usage, competition among food, feed, fuel, rising environmental pressure, and nutritional disparities across income group. Then if we talk about OECD, who is the Security Secretary General here? Matthias Hubert Paul Corman, headquartered in Paris, France, established in 1961. Then Food and Agriculture Organization, who is the Director General here? Q Dongyu, headquartered in Rome, Italy, established in 1945. Next is, students, India has co-chaired the United Nations GOF, that is Group of Friends meeting on accountability for crimes against peacekeepers. So India has co-chaired this high-level meeting along with Bangladesh, Egypt, France, Morocco, and Nepal at UN headquarters in New York, USA. This is to reaffirm the global commitment towards ensuring accountability for crimes committed against the UN peacekeepers, right? And this meeting basically, it focused on the strategies that we will be implementing here to combat impunity, strengthen the legal framework. Also, India, the largest
troop contributing country here to the UN peacekeeping mission has deployed over 3 lakh personnel over the last 70 years, with 182 Indian peacekeepers sacrificing their life during these missions. Then RBI, they have issued the revised rules for agriculture, small businesses loan against gold and silver. So RBI, they have issued the new directions here, allowing voluntarily pledge of gold and silver as a collateral for agriculture and MSME loans. I repeat, gold and silver will be kept as a, now can be kept as a collateral, right? For what? This will be a collateral for the loans that they can take for agriculture as well as MSME loans. RBI stated that the bank can sanction loans under the collateral free limit in the agriculture and MSME sector even if the borrower voluntarily pledge gold or silver. Correct? So there is no need for them, and even if they want to pledge, then also they can get a free loan. They do not have to pay any collateral. So these collaterals that we were discussing, gold and silver, the farmers or the in the agriculture sector or MSMEs, they need not provide these collateral. Correct? So it will be a collateral free limit here. And this practices does not breach existing guidelines as the pledge is not mandatory but initiated by the borrower. However, the collateral free loan rules for MSMEs are not applicable to RRB and cooperative banks. Next, if we see about the priority sector lending, these are the sectors which the government and RBI consider important for the country's development and the priority should be given for the development of these sectors. For example, the domestic commercial banks and foreign banks with 20 branches and above is 40% here. Then FB with less than 20 branches 40%, RRB 75, SSB 75 and primary urban cooperative banks 60%. Next is NIPL. They have added 13 banks to UPI Pay Now linkage to boost the India-Singapore ties or remittances. Correct? So National Payment Corporation of India, NPCI, and their international arm, that is NPCI International Payment Limited, hence it becomes NIPL. They have recently announced the inclusion of 13 additional Indian banks into the UPI Pay Now network, that is the payment linkage between India and Singapore. Now, with the addition here, the total number of participating Indian banks has reached to 19. If we talk about this UPI Pay Now, this is a service that was launched as a joint initiative between the Reserve Bank of India and Monetary Authority of Singapore. This initiative, it will enable the account holders of the participating bank and financial institutions in India and Singapore so that they can perform this cross-border remittance transaction through UPI Pay Now linkage. Right? And this UPI Pay Now, this is the world's first cloud-based real-time cross-border payment system, that is, it uses cloud technology instead of the physical servers that they kept in house. So using the clouds only, right? They are not having any physical servers in their house or in their building. They are using cloud servers. Next is Taiwan's CTBC Bank has proposed to set up the IBU at GIFT City. IBU is your IFSC banking unit and it will be established at GIFT City in Gandhinagar, Gujarat. So CTBC, that is a Taiwanese commercial bank. And with this move, CTBC, it will become the second Taiwanese bank to establish an IBU at GIFT City following the Taipei Fubon Commercial Bank. Next is IRDAI panel has recommended the ban on the mergers between insurers and non-insurers. The panel led by Dinesh Kumar Khara, the chairman of SBI, highlighted the potential risk to the policy holders here. And if we see here, the committee submitted their confidential report during the 132nd meeting of IRDAI that was held in Hyderabad, Telangana. And the mergers between the insurers and non-insurers could lead to a moral hazard, increasing the conflict of interest and undermining the protection of the policyholders and the stability of this sector. Right? So IRDAI panel, they have recommended a ban on the mergers between the insurers and non-insurers. Then next is economy and business. NABARD, they have unveiled Nivaran, that is a rural tech collab and other major initiatives on their 44th foundation day. So Nivaran, rural tech collab and other major initiatives have been launched during the 44th foundation day. Right? If we talk about Rural Tech Collab first, this is an open digital innovation platform which enables startups, research institutes and tech developers to co-create, test and scale the rural-centric technology. So focus here will be on the rural areas to help them grow with the technology. Then Nivaran, it is a dedicated internal grievance redressal system that is designed for rural cooperative banks. It offers 24/7 digital access for the complaint resolution and governance enhancement.
If we talk about sub office here, NABARD, they have inaugurated this sub office in Leh, Ladakh. This reinforces the commitment to reach the remotest regions of the country with credit, capacity building, and the development of the finance. Hence, these are the things that has been launched. Then is awards and recognition. Zepto's Adit Palicha and Kaivalya Vora has been or has topped the Avendes Wealth Huron India Under 30 Entrepreneur List of 2025. Correct. So Avendes Wealth Management Private Limited, they have collaborated with Huron India and has released the inaugural Avendes Wealth Huron India Under 30 list. It recognizes 79 startups that are aged 30 and under who are driving innovation and reshaping the future of Indian enterprise across multiple sectors. Adit Palicha and Kaivalya Vora, both are 22 years of old and they are the co-founders of the quick commerce platform Zapto. Then here you can see on first, second and third position. Next is appointments and resignation. IGPL. IGPL is your Indian Golf Premier League. They have launched the Yuvraj Singh as their co-owner and brand ambassador here. This initiative was supported by Ministry of Youth Affairs and Sport, and the league will be a 4-week golfing extravaganza featuring a franchise format scheduled to take place from January to Feb 2026. Right, so this is your appointments and resignation. Then next is AC has approved the extension of Gurmeet Singh as the chairman and managing director of NTPC Limited by the year till July 2026. Right, and so 1 year till next 1 year this extension has been approved. Moving on to science and technology, SpaceX, owned by Elon Musk, has launched 24 Amazon Kuiper internet satellites into the orbit. What is this Kuiper internet satellite? These are the satellites. They will be making a constellation around the earth. This is the mission of which, that is Amazon, right? And their aim is also to similarly tackle the Starlink and provide internet services to their organization or people nearby. Which was the rocket used here to launch this? It is Falcon 9 rocket, right? And this is the third operational launch of Amazon's Project Kuiper, that is providing a global broadband internet through a planned constellation of over 3200 low earth orbit satellites. And so far the total number of satellites that has been launched is 78. Next is SpaceX. If we see here, Elon Musk is CEO, headquartered Texas, USA. If we talk about Amazon, who is the CEO? Andrew R. Jassy, headquartered in Washington, USA. Next is Day of International Criminal Justice, observed on 17th of July. This day is observed on 17th of July to commemorate the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998. Right, this year it is the 27th anniversary of the adoption of the Rome Statute. Next is World Snake Day, observed on 16th of July to raise awareness about over 3000 snake species around the world and also to recognize the significance of snakes and also burst the myths that are related to snake. And this is the theme here, students, so take a note of the theme also. Next is state news. Dr. Puneet Kumar Goyal appointed as the Chief Secretary of Manipur. I repeat, ACC, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the proposal of Department of Personnel and Training, right, to appoint Dr. Puneet Kumar Goyal as the Chief Secretary of Manipur starting from 16th of July 2025, and he will serve until his superannuation on 31st of August 2025. He will be succeeding whom? Prashant Kumar Singh. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next is identify the organization in India that collaborated with the Federation of Italian Companies for Aerospace, Defence and Security during the visit of Secretary of the Ministry of Defence Rajesh Kumar Singh to Rome, Italy from 14th to 15th of April. It is Society of Indian Defence Manufacturers. Next, which Indian airport secured the 9th position in the passenger category in the world's busiest airport 2024 ranking released by Airports Council International World in April 2025. So which is that Indian airport? It is Indira Gandhi International Airport of New Delhi, and it ranked at the 9th position in the busiest airports globally. Jackson Atlanta Airport of United States of America secured the first position. They are handling close to 108 million passengers, or they handled 108 million passengers in 2024. Next, identify the former England cricketer who has been awarded the knighthood conferred by the British monarchy on Commonwealth nations for his service to cricket. So, Sir James Michael Anderson was honored with this knighthood award. Next, Justice Bhushan Ramkrishan Gawai, that is BR Gawai, will take oath as the Chief Justice
of India. So he will be taking oath as the 52nd Chief Justice of India. Correct? On 14th of May 2025, he will be succeeding Chief Justice of India Sanjeev Khanna. Next, in April, who has been reappointed as the chairperson of the International Cricket Council Men's Cricket Committee, succeeding Anil Kumble. So Saurav Ganguly. Correct? He has been reappointed as the chairperson of the ICC. He will be succeeding Anil Kumble. Next, identify the company that in April 25 successfully completed the preliminary sea trials of 651 kilowatt waterjet propulsion system for the Indian Navy under Technology Development Fund scheme of DRDO. Which is it? It is L&T, Larsen and Toubro. Next, in April, Dash defeated Hikaru Nakamura to clinch the Paris Freestyle Chess Grand Slam held at the Pavilion in Paris, France. So, who? Magnus Carlsen, right? The world's #1 chess player defeated Hikaru Nakamura to win the Paris Freestyle Chess Grand Slam. Next, Abdullah bin Ahmed Bawai, correct? The former Prime Minister of which country passed away at the age of 85? So, of Malaysia. Next, identify the institution that launched the India's first ever free access seed germination database featuring techniques for numerous native plant species in April 2025. It is Ecological Restoration Alliance of India. Next, mention the fintech company that launched the UPI Circle feature in collaboration with NPCI to promote digital financial inclusion by allowing the users to delegate UPI payments authority to trusted individuals. It is PhonePe. Next is mark the correct statement regarding the flagship initiative of Mission Amrit Sarovar under Azadi Ka Amrit Mahotsav. If we look at the options, option A, B and C, all three of them are rightly mentioned. Next is, in April, Union Minister C.R. Patil launched the digital platform. This is the platform during a review meeting of the key projects under the National Mission for Clean Ganga. This platform was developed under the Ministry of Jal Shakti and which of the following organization? It was under IB. The platform was developed under which organization? It was developed under Wildlife Institute of India, WII. Correct? And next is the Government of India has signed the headquarter agreement with which organization and officially designating our country India as the host country for the headquarter and secretariat. So this is for IBCA, International Big Cat Alliance. This is for preserving of almost 8 big cat species, and for this India has allocated 150 crore rupees, and now India will be the host country for this IBCA for a foreseeable future. Next, in April, Prime Minister Narendra Modi awarded the GI certificates to 21 traditional products from Uttar Pradesh. Which of the following products does not belong to Uttar Pradesh? Among the following, it is gamosa that does not belong to Uttar Pradesh. It belongs to this gamosa product. It belongs to which state? This is your homework. Right, rest are the products from UP. And now UP has become the state with the maximum number of GI tags. Tamil Nadu, which was earlier the first position, now stands at the second position. Correct? Tamil Nadu is having 77 GI tags. Correct? Can you tell me UP is having how many GI tags? I correct myself. 77 is of UP. I have given the answer. Tamil Nadu is having 69. Next, name the airport that was recently inaugurated by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis in Belora, Vidarbha region in Maharashtra, which is being operated by Alliance Air. So, name that airport. It is Amravati Airport that was inaugurated by Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis. Next, in April, India and 62 other countries agreed to the world's first global carbon tax to combat greenhouse gas emissions in dash industry. It will be in the shipping industry. And this new framework, it is expected to be formally adopted in October 2025, after which it will become mandatory for the large ocean going ships of more than 5,000 gross ton, which accounts for 85% of the carbon dioxide emissions from the international shipping. Next, identify the Indian banks that were featured in S&P Global Market Intelligence latest annual ranking of the world's 100 largest banks by assets released in April 2025. If we look at the options, option A and C are right, that is SBI and HDFC Bank. Next, in April,
Mahakjanko. They have signed an MOU with Russia's Rosatom for the joint development of small modular reactor using which type of fuel? So in these small modular reactor, thorium is the fuel that will be utilized. Next, mention the name of the Qatar-based Palestinian photographer who won the 2025 World Press Photo of the Year. The photo here is of a Gaza, right? We know that in Gaza Strip, heavy bombing was done by Israel. So this photo is of a Gazan boy. The name of the boy is Muhammad Azur. This boy lost his both the arms during an Israeli strike in Gaza in March 24. Right, and for this photograph, he has won this World Press Photo of the Year award. Name that photographer, that is Qatar-based Palestinian photographer. So Samar Abu Ilof. Next, identify the country where Duro Makot, a 61-year-old doctor and academician, has been appointed as the new Prime Minister of the country of Serbia. Next, in April, former Dash Secretary Ajay Bhushan Pandey was appointed as the Vice President of AIIB, that is Investment Solutions, President of the Investment Solutions at the AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. So he is the former Finance Secretary. Next, in April, Saikom Mirabai Chennu, the Tokyo 2020 Olympic silver medalist, was elected as the chairperson of the Athletes Commission of which sport governing body in India. So she was appointed for the International or Indian Weightlifting League, correct? The chairperson of the Athletes Commission of the Indian Weightlifting Federation. I correct, not league, it is wrong. Indian Weightlifting Federation. Option 4 is right here. Third is wrong. Next, name the third edition of the Meteorological and Oceanological Symposium conducted by Indian Navy on 14th of April to commemorate the formation of the World Meteorological Organization. So, which is the third edition of the Meteorological and Oceanological Symposium? It is Megyan 25. Next is in April, the Beijing India Report 24 was released, which marks the dash anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, highlighting the gaps in gender and climate integration. So it marks which edition? It marks the 30th edition anniversary of the Beijing Declaration. Next is in April, Central Railways in collaboration with Bank of Maharashtra launched India's first on-board automated teller machine on railway that will enhance the passenger convenience and boost non-fare revenue. So on which railway it was launched? It is launched on the Panchavati Express. Next, in April, the frontline contingent of the Indian Air Force arrived at the Al Dhafra Air Base in UAE to participate in which exercise? So they landed in UAE to participate in the Desert Flag 10 exercise, right? In this edition, 12 countries took part in this exercise, and from India, it is MiG-29 and Jaguar that took part. Next, mention the India's first bullet train project that will benefit from the donation of 2 Shinkansen train sets, that is E5 series and E3 series, by the government of Japan in April 2025. So which is that? It is Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. Next, in April, who won the F1 Saudi Arabian Grand Prix 25 held at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah, Saudi Arabia? So who won this? It was won by Oscar Piastri. Oscar Piastri, he's an Australian driver. He drives for McLaren. Second position was secured by Max Verstappen. Third position by Charles Leclerc. Next is pick out the correct statement regarding the National Civil Services Day observed annually in India. If we look at the options here, all these 3 options are rightly mentioned. Pause the video and go through them. Next, mention the hospital that was ranked 97th in the 2024 edition of the World's Best Hospital ranking in April, conducted by Newsweek magazine in collaboration with Statistica Incorporation. So name that hospital. It is All India Institute of Medical Science in New Delhi, that is AIIMS, New Delhi. Next, in April, India surpassed China with a total of how many designated Ramsar sites? So a total of 82 Ramsar sites. Correct? We have surpassed China. Next, Union Minister Sarabandana Sonowal inaugurated the cruise operations from Mumbai International Cruise Terminal at Bellad Pier in Maharashtra. Mention the port for which infrastructure agreement worth 5,700 crore rupees were signed during the event. So mention that port. That port is Vadhavan Port. Where is this Vadhavan Port located? What is the location? It is in Maharashtra. Correct? Next,
Name the organization that conducted the India's first quantum key distribution transmission in collaboration with Sterlite Technologies Limited over a 4 crore multi-core fiber in April 25. Which is that organization? It is CDOT, Center for Development of Telematics, and they have carried out this quantum key distribution over 4 crore multi-core fiber. Next, what is the age above which minors are now allowed to independently open and operate their own saving and term deposit account as per the guidelines released by RBI? So, if any individual, a child who is above 10 years of age can operate and have its own account. Next, in April, which wholly owned subsidiary of Tata Sons secured a 750 million euros, approximately $990.79 million 2-year bridge loan to construct the UK's largest battery manufacturing facility. What is this bridge loan? Bridge loan is a loan that is given for a short term. In this case, this loan is for 2 years. And what this bridge loan does is that, say for example, you want to buy something new and you have something old that you want to liquidate. So the gap between this two period where you need the money, you know that you are buying this property, and on the other side you know that you will be selling this property, you are in the process of selling, the time period between this, right, in this case this bridge loan is provided. So which wholly owned subsidiary of Tata Sons got this bridge loan? It is, name that company. Which is that company? Agratas Energy Solutions Private Limited, a subsidiary of Tata Sons. Next, in 2025 edition of the Wisden's Cricketers Almanac revealed its 5 Wisden's Cricketer of the Year, highlighting the exceptional performances in the world of cricket. Identify the cricketer who is not listed among these 5 Wisden cricketers. Among the following, who is not listed here? So, Harry Brook is not listed, rest all are listed. Now let's move to the homework section, students. First question is, name all the states that has achieved 100% in literacy under Ullas initiative. Second question, tell me recently an application was launched on the World Emergency Day by AIMS. AIMS Bhopal. They have launched an application. Name that application. Then third question, tell me recently India has been elected to the UN SOC, right? That is Economic and Social Council. Your homework is to tell me the term, the duration here for the India's election to this organization. Fourth question, tell me recently FIGTAL. This is the branch that has been opened by which bank in Kolkata, West Bengal. And fifth question, students, tell me various organizations such as your SBI, such as your RBI, OECD, Fitch ratings, right? By all of them, what is the projection that we are seeing for FY26, right? So all these are important questions, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की, देन हम बात करेंगे एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है वेस्ट पिकर्स के लिए, देन इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती है उसको टैकल करने के लिए। देन धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का एक इंडियन कैंपस जो कि गुरुग्राम में रहेगा। ऑल दीज थिंग्स एंड मेनी मोर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स। अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसको ज़रूर देखा करो। ये आपकी लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स एंड कैबिनेट अप्रूवल्स हम देखेंगे। पहला है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि 6 साल के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है। 25-26 से 31-32 तक इसको लॉन्च किया गया है। 24,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया है एंड दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द मर्ज 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो कि 11 डिपार्टमेंट्स में आती हैं। पहली चीज। दूसरी आ जाती है सीसीईए ने अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशन को एनएलसीआईएल के साथ, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें ग्रोथ हम प्रमोट कर सकें, ज्यादा ग्रोथ आ सके, एक्सेलरेशन आ सके। देन दिस एग्जेम्पशन ये एनेबल करेगा एनएलसीआईएल को कि ये 7,000 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं इन देयर होली ओन्ड सब्सिडरी विदाउट रिक्वायरिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट इनटू द एग्जिस्टिंग डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक। तीसरी चीज, सीसीईए ने इन्होंने अप्रूव किया एनहेंस डेलीगेशन ऑफ पावर टू एनटीपीसी लिमिटेड फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 20,000 करोड़ रुपीज, कि ये 20,000 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एंड अपनी अदर सब्सिडरीज में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ावा दिया जा सके इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। देन यूनियन कैबिनेट ने पास किया एक रेजोल्यूशन हेलिंग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इनकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्सियम 4 मिशन की, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया था। 18 दिन का मिशन था, 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे यहाँ पे, जिसमें से एक इंडियन थे शुभांशु शुक्ला। कहाँ गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। ड्रैगन कैप्सूल की मदद से फल्कन 9 रॉकेट इनको लेके गया था। फिर आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीएल वर्मा, इन्होंने लॉन्च की एक हेल्पलाइन नंबर फॉर वेस्ट पिकर्स राइट ऑन नमस्ते डे। ये ऑब्जर्व किया गया था लखनऊ यूपी में, जिसके दौरान ये आपकी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लॉन्च किया गया है वेस्ट पिकर्स के लिए। 14473 ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है हेल्थ पिकर्स को, वो इस पे कॉल कर सकते हैं। इस नमस्ते डे, ये नमस्ते क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम डे, लखनऊ यूपी में इसको ऑब्जर्व किया गया एंड इसी के दौरान यहाँ पर पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, आयुष्मान कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू सीवियर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए राइट। एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के मॉड्यूल्स भी लॉन्च किए गए फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ द सेफ्टी वर्कर्स। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट गुजरात। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट्स, इसको मार्क करेंगे। गुजरात वो इंडिया की पहली या फिर गुजरात वो स्टेट बन गई जिन्होंने इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ताकि जो इनहेरिटेड डिजीज हमें देखने को मिलती है ट्राइबल कम्युनिटीज में, हम उसको रोक सकें। उसको अगर हमें पहले से ही एक प्रॉपर डाटाबेस होगा जहां पे जो कि ये बनाया जाएगा, ये डाटाबेस ही बनाया जाएगा, पहला जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट राइट। यहाँ पे डाटाबेस बनाया जाएगा, दोनों पेरेंट्स एंड अगर 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे को स्टडी करके कि जो ये डिजीज इनहेरिटेड हो रही हैं राइट, ये क्या इसका रीजन है राइट, क्यों ये इनहेरिटेड हो रही हैं एंड अगर वो इनहेरिटेड हो रही हैं राइट, तो बच्चे में जब वो इनहेरिटेड होंगी तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें, हम उसके लिए पहले से ही उसका क्योर ढूंढ सकें एंड उसको बढ़ने ना दें राइट। तो इसीलिए डाटाबेस बनाया जाएगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई, थैलेसीमिया हो गई, सर्टेन कैंसर्स हो गए राइट। तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को फ्रॉम दीज इनहेरिटेड डिजीज इन ट्राइबल ग्रुप। इस स्कीम के अंदर 2,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला 20 ट्राइबल कम्युनिटी से एंड पार्टिसिपेशन यहाँ पे लिमिटेड है टू हेल्दी इंडिविजुअल जो कि 18 साल से अबव है विद नो विजिबल ब्लड डिसऑर्डर्स करेक्ट। एक और चीज यहाँ पे अगर गुजरात की मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर रहेंगे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन गुरुग्राम में राइट। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट्स गुरुग्राम के लोगों के लिए कि ये इंडिया या फिर हम बोले जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है राइट, ये आपका इनका यूके बेस्ड ये एक कैंपस है, यूनिवर्सिटी है। इन्होंने अपना कैंपस खोला है कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में। यूजीसी बेस्ड रहेगा, यहीं पे हम देखेंगे आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड यूजीसी के द्वारा इसको सेटअप किया गया है राइट। एंड अगस्त 2025 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो जब ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जैसे बैचलर ऑफ साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में ये लॉन्च किया गया एंड इंटरनेशनल टेक पार्क में ये अपना ये लॉन्च किया गया है। फिर आ जाते हैं इंडिया एंड कुवैत, इन्होंने एक अभी एमओयू साइन किया ताकि फ्लाइट कैपेसिटी को बढ़ावा दिया जा सके। अभी इंडिया और कुवैत के बीच में 12,000 सीट्स ऑक्यूपाइड होती थी ईच साइड के लिए, जो कि अब बढ़कर 18,000 सीट्स कर दी जाएंगी। अगर हम देखें इंडिया और कुवैत के बीच में
अगर हम देखें डेली बेसिस पे 40 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। इससे होगा क्या, जो लोगों की आवाजाही है वो बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि मे बी ये रीज़न इसलिए कि पहले कंजेशन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, टिकट्स टाइम पे नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग विजिट करना चाहते हैं एक दूसरी कंट्री में, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सीट्स 12,000 से बढ़ा के 18,000 करने की बात की गई। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन का आर्म है, इन दोनों ने मिलकर एग्रीकल्चर आउटलुक रिलीज किया है 2035 से 2034 के लिए। एंड यहाँ पे बताया कि जो बायोफ्यूल की डिमांड है, राइट, ये टू कंज्यूम 27% ऑफ द ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन बाय 2034। इन रिपोर्ट के हिसाब से 2034 तक 40% ऑफ द ग्लोबल करियर सीरियल प्रोडक्शन इसको कंज्यूम किया जाएगा डायरेक्टली बाय ह्यूमंस। 33% will be used for animal feed and 27% इसमें से यूज किया जाएगा बायोफ्यूल एंड इंडस्ट्रियल यूसेस के लिए। अगर हम इंडिया में देखें तो ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 0.9% एनुअली यहाँ पे 2034 तक हमें बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। इंडिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया ये की ड्राइवर्स रहेंगे इस ग्रोथ के, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडोनेशिया, ब्राजील एक डेवलपिंग नेशन है। तो जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी मिले हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं OECD की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल माथियास ह्यूबर्ट पॉल कॉर्मन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। एंड यूनाइटेड नेशन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल रहेंगे क्यू डोंग्यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में। एंड 1945 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। फिर आ जाते हैं इंडिया ने को चेयर किया यूनाइटेड नेशन GOF, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीटिंग को ऑन अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स, राइट। जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल, इन सब का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिला। एंड ये इंश्योर करने के लिए था कि जो हम क्राइम्स अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द UN पीस कीपर्स, इंडिया अगर हम देखें तो 3 लाख से भी ज़्यादा हमने पीस कीपर्स UN में सेंड किए हैं ओवर द पास्ट 70 ईयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये। एंड यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी जाते हुए हमने यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग दिस पीस कीपिंग मिशंस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, RBI ने इशू की रिवाइज्ड रूल्स फॉर द एग्रीकल्चर स्मॉल बिजनेसेस लोन्स अगेंस्ट व्हाट। तो ये किसके लिए लोन्स रहेंगे? दीज आर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर। क्या ये सही है? देखो एक चीज समझो, अगर आपको कोई लोन लेना पड़ता है ना तो कुछ ना कुछ कोलेटरल मतलब गिरवी रखवाना पड़ेगा, राइट। एंड अगर होम लोन होता है तो कागज जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं वो रखवाने पड़ते हैं। अगर आप कहीं पे जाएंगे गोल्ड देंगे तो उसका आपको 70% तक का गोल्ड भी मिल जाएगा। पहले 90 होता था बट अब रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। फिर इससे होगा क्या, ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है ना, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली फार्मर्स को एंड फार्मर्स के साथ साथ जो MSMEs हैं इनको बूस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? अब क्या होगा, फार्मर अपनी इच्छा से रखना चाहे रख सकता है, लेकिन इससे होगा क्या, अब जो आपका गाइडलाइंस आई हैं वो क्या है कि आपको कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, कोलेटरल फ्री लोन हो जाएगा ये, राइट। इसमें आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। किन किन को? आपके फार्मर्स को एंड MSMEs को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं NIPL। NIPL क्या है? NPCI IPL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो NIPL ये इंटरनेशनल नाम है NPCI का ही। इन्होंने 13 बैंक्स को ऐड किया टू UPI पे नाउ लिंकेज टू बूस्ट द इंडिया सिंगापुर रेमिटेंस, राइट। इससे अब होगा क्या, इजीली इंडिया और सिंगापुर के बीच में पेमेंट का आना जाना हो सकेगा। एंड 13 नए बैंक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो टोटल नंबर 19 हो गए अब यहाँ पे। अगर UPI पे नाउ सर्विस की बात करें, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बिटवीन RBI एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा, जिससे जो अकाउंट होल्डर्स हैं ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड सिंगापुर, ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये UPI पे नाउ ये सर्विस जॉइंटली लॉन्च की गई थी RBI एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा, ये जरूर याद रखना है। एंड ये अलाउ करती है यूजर्स को टू सेंड और रिसीव मनी एफिशिएंटली वाया मोबाइल नंबर और VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। फिर आ जाते हैं ताइवान के CTBC बैंक। इन्होंने प्रपोज किया कि ये सेटअप करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट IBU, कहां पर? जिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई हमें दिखने वाली है। आपका होमवर्क है, अभी यूक्रेन की नई प्रेसिडेंट या फिर हम बोले नई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है, इनमें से आप बताओ कौन अपॉइंट किया गया है, कौन रहेंगी वो, राइट। जेलेंस्की के द्वारा यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट की गई है, मैंने हिंट दे दिया अब, राइट। इन्होंने मतलब जेलेंस्की की जगह नहीं, जेलेंस्की ने इनकी अपॉइंटमेंट की अभी।
नेक्स्ट आ जाते हैं IRDAI पैनल, इन्होंने रिकमेंड किया बैन ऑन द मर्जर्स बिटवीन इंश्योरर्स एंड नॉन इंश्योरर्स। इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है बिटवीन इंश्योरर्स एंड नॉन इंश्योरर्स के बीच में। अगर हम मर्जर करा देते हैं तो मॉरल हज़ार्ड देखने को मिलता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, एंड जो पॉलिसी होल्डर्स हैं एंड स्टेबिलिटी है इस सेक्टर की वो कहीं ना कहीं हिलती हुई दिखती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे स्टूडेंट्स। नाबार्ड ने अनवेल किया निवारण रूरल टेक कोलैब एंड अदर मेजर इनिशिएटिव्स को अपने 44th फाउंडेशन डे के दौरान। सो टेक अ नोट ऑफ इट, राइट। ये जो सेलिब्रेशन है ये बेसिकली इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट लैंडस्केप या फिर हम बोले इंडिया का जो रूरल लैंडस्केप है उसको डेवलप करने का काम करेगा थ्रू इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी तो लोग वहाँ पे ग्रो करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, राइट। एंड ऐसे ही कोई एरिया डेवलप होता हुआ दिखता है हमें। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रूरल टेक की, रूरल टेक क्या है? ये डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे स्टार्टअप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाएगा कि जो रूरल सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे टेक को डेवलप कर सकें, टेस्ट कर सकें एंड स्केल कर सकें। फिर निवारण दूसरी चीज आ जाती है, ये ग्रीवियंस रिडर्सल सिस्टम है फॉर कोऑपरेटिव बैंक, 24/7 डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कराएगा फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन एंड गवर्नेंस एनहेंसमेंट। एंड सब ऑफिस यहाँ पे लॉन्च किया गया नाबार्ड के द्वारा लेह लद्दाख में। ये दिखाता है कि इवन इन द रिमोट एरियाज हम यहाँ पे डेवलप करने का काम करते हैं एंड यहाँ पे हम ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। जेप्टो के आदित्य पलिशा एंड कावेल्या वोरा इन्होंने टॉप किया एवेंडस वेल्थ ह्यूरन इंडिया अंडर 30 एंटरप्रेन्योर लिस्ट 2025 में। ये दोनों जेप्टो के को फाउंडर हैं, राइट, दोनों 22 साल के हैं। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। IGPL जो कि है इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग, ये इंडिया की पहली सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज गोल्फ लीग होने वाली है जिसने अपॉइंट किया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना एज अ को ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर। एंड इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। फिर आ जाते हैं ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ गुरमीत सिंह जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, एंड 1 साल से इनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। और NTPC से अगर आपको रिलेटेड याद हो तो लेह लद्दाख में इनके द्वारा बसेस लॉन्च की गई थी जो कि पावर की जाएंगी हाइड्रोजन से, ग्रीन हाइड्रोजन से। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आते हैं। फिर स्पेसएक्स जो कि ऑन किया जाता है इलॉन मस्क के द्वारा, इन्होंने 24 अमेजॉन क्यूपर इंटरनेट सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में लॉन्च करा। ये क्यूपर सैटेलाइट बेसिकली इनका भी काम क्या है, जैसे स्पेसएक्स या फिर जैसे हम बोले इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो क्या काम करती है, अर्थ के चारों तरफ कॉन्स्टलेशन बना रही है वो सैटेलाइट्स का। सिमिलरली अमेजॉन का क्यूपर ये भी यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट इंटरनेट या फिर एक सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बना रहा है ताकि लोगों तक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा सके, करेक्ट। एंड यहीं पे अगर हम देखें तो 24 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड जो टोटल अगर हम देखें क्यूपर का मिशन का तो टोटल हम कितनी सैटेलाइट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो कंपनी का यहाँ पे टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3200 सैटेलाइट्स को यहाँ पे स्पेस में ले जा सकें एंड इवन इन द रिमोट एरियाज यहाँ पे हम इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, फिर स्पेसएक्स की बात करें। CEO इलॉन मस्क, टेक्सास USA में हेडक्वार्टर है, 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। अमेजॉन की बात करें, CEO कौन रहेंगे, एंड्रू जेसी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA एंड इसको 1994 में एस्टेब्लिश किया गया। फिर आ जाते हैं डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, 17 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका डे का एम बेसिकली क्या रहता है कि जो रोम स्टैचू था, राइट, रोम स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको अपनाया गया था 1998 में। एंड सिंस देन 17 जुलाई से हम इस डे को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। पहली बार इस डे को 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। 120 कंट्रीज के द्वारा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो ट्रीटी है उसको साइन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिर वर्ल्ड स्नेक डे, 16 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 3000 से भी ज़्यादा स्नेक स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो मिथ्स हैं स्नेक से रिलेटेड उनको ख़त्म करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये आप यहाँ पे थीम देख सकते हैं, ये थीम पूछी जाएगी, मार्क करना। इसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, राइट। 16 जुलाई 2025 से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये प्रशांत कुमार सिंह को सक्सीड करेंगे जो कि एक 1993 बैच IAS ऑफिसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग।
नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द फिनटेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्कल को फीचरिंग इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई ताकि प्रमोट की जा सके डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अलाउइंग द यूजर्स टू डेलीगेट यूपीआई पेमेंट अथॉरिटी टू ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। राइट, डेलीगेट पेमेंट्स होंगी, फुल डेलीगेशन मिलेगी, पार्शियल डेलीगेशन मिलेगी। राइट, या फुल पेमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ लिमिट तक ही पे कर सकेंगे। तो किस फिनटेक कंपनी को इन्हें लॉन्च किया था ये यूपीआई सर्कल? ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिशन अमृत सरोवर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आप ये देख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिव्यू मीटिंग ऑफ द की प्रोजेक्ट्स अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पूछा जा रहा है ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है एंड ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर आता है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? एंड ऑफिशियली डेजिग्नेटिंग इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटरीट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हेडक्वार्टर अग्रीमेंट किसके साथ? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ, आईबीसीए के साथ। राइट, एंड इस आईबीसीए के अंडर 8 बिग कैट्स को यहाँ पे कंजर्व करने की बात की गई एंड अब इंडिया यहाँ पे होस्ट कंट्री रहेगा फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए फॉर दिस आईबीसीए एंड इसी के लिए इंडिया ने 150 करोड़ रुपए भी यहाँ पे अलोकेट किए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया जीआई टैग या फिर अवार्ड किए जीआई टैग सर्टिफिकेट्स टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी। इससे हुआ क्या? अब यूपी वो स्टेट बन गई है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स जो 77 पे आ जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं तमिलनाडु विद 69 जीआई टैग्स। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसमें से जीआई टैग नहीं मिला है, जिसको जीआई टैग नहीं मिला है यूपी से? तो गमोसा को जीआई टैग नहीं मिला है यूपी से। ये गमोसा प्रोडक्ट है कहाँ पर, क्या है, कौन सी स्टेट का एंड क्या इसको जीआई टैग मिला है या नहीं मिला, ये आप नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा इन बेलोरा विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अलायंस एयर। तो वो है अमरावती एयरपोर्ट। नेक्स्ट इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज इन्होंने अग्री किया टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स टू कॉम्बैट द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किस इंडस्ट्री में? तो शिपिंग इंडस्ट्री में रहेगा ये। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडियन बैंक दैट फीचर्ड इन द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लेटेस्ट एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक्स बाय एसेट्स रिलीज्ड इन अप्रैल। तो कौन सी हैं जो दो आई हैं? वो हैं SBI एंड HDFC बैंक यहाँ पे लिस्ट किए गए। नेक्स्ट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 लिस्ट जो कि न्यूयॉर्क USA बेस्ड टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो इनमें से सभी सही हैं एक्सेप्ट फिफ्थ जो कि है अमेरिकन एक्टर डेमी मोरे। ये फीचर किए गए लीडर्स कैटेगरी में यहाँ पे, तो नहीं ये लीडर्स कैटेगरी में नहीं, आइकन्स कैटेगरी में यहाँ पे फीचर किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अप्रैल इंक्लूडेड 7 इंडियंस आउट ऑफ द टोटल 116 लीडर्स जो कि 48 से कम है एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस फील्ड जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स आते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट। तो इनमें से कौन से इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में फीचर नहीं करते हैं? वो है विजय शेखर शर्मा, बाकी सभी यहाँ पे फीचर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन अप्रैल फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्रिस जेंकिंस। तो वो है डोनाल्ड रुकारे। नेक्स्ट आ जाते हैं पहला 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया जाएगा इंडिया में जो कहाँ पर होगा? कलपक्कम इन तमिलनाडु। अब देखो इससे होगा क्या कि जो वेस्ट जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से उस वेस्ट को यहाँ पे कम कर दिया जाएगा एंड उससे मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाने का काम किया जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी है कि हम 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें न्यूक्लियर रिसोर्सेज से वेरी सून। एंड एट प्रेजेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका इंडिया का जो इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 8.18 गीगावाट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच 2.0 इन अप्रैल 2025। तो वो है पेंटागन प्रेस। नेक्स्ट इन अप्रैल महाजैन को इन्होंने एक MOU साइन किया रशिया के रोसाटॉम के साथ फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यूजिंग विच टाइप ऑफ फ्यूल। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे इसमें थोरियम फ्यूल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मतलब थोरियम को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इन्होंने फोटो ली मोहम्मद अजौर की। ये एक गाजन बॉय है, राइट, जिनके दोनों आर्म चले गए थे ड्यूरिंग एन इजरायली स्ट्राइक जो कि पैलेस्टीनियन गाजा में हुई सिटी में 2024 मार्च के महीने में हुई थी। इसके दौरान इनके दोनों आर्म्स यहाँ पे कट गए थे, राइट, मतलब डैमेज हो गए थे। तो कौन है वो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर? वो है समर अबू इलॉफ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर डूरो मकॉड जो 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं एंड अकेडमिशियन हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो सर्बिया के यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का। कहाँ पे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो पूछा जा रहा है ये फॉर्मर क्या है? ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, इन अप्रैल मेराबाई चानू, राइट, इन ये जो कि टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है एथलीट्स कमीशन का। किस गवर्निंग बॉडी का? तो ये एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी है ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट, उस थर्ड एडिशन ऑफ मीटोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम का नाम बताओ जिसको कंडक्ट करा गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 14 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। तो थर्ड एडिशन का नाम क्या रहेगा? मेज्ञान 25। नेक्स्ट, इन अप्रैल बीजिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई जो मार्क करती है कौन सा एडिशन और विच एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन। तो ये 30वां एनिवर्सरी थी बीजिंग डिक्लेरेशन का एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो कि हाईलाइट करती है जेंडर एंड क्लाइमेट इंटीग्रेशन के बीच में जो गैप्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंट्रल रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने लॉन्च किया ATM मशीन ट्रेन्स में लॉन्च की गई है, AC कोचेज में ये लॉन्च की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो ट्रेन है जिसमें इसको लॉन्च किया गया, तो वो है पंचवती एक्सप्रेस। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब फ्रंटलाइन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये अल डाफरा एयर बेस पे अराइव करती है UAE में ताकि ये पार्टिसिपेट कर सके इन विच एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में इसको पार्टिसिपेट किए के लिए यहाँ पे गई जो कि UAE एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे गई है तो कौन से एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा इस एक्सरसाइज में? MiG-29 का एंड जैगुआर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द डोनेशन ऑफ 2 शिंकेनसेन ट्रेन सेट जो कि है E5 सीरीज एंड E3 सीरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा यहाँ पे इंडिया को गिफ्ट की गई है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे ये यूज़ की जाएंगी एंड ये बेसिकली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाएंगी ताकि इंडिया इनकी री इंजीनियरिंग करके एक तो पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सके एंड इसके लिए ट्रेन्स भी यहाँ पे फिर इंडिया मेक इन इंडिया के अंडर बनाई जा सके। 320 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द जेदा सर्किट इन जेदा सऊदी अरेबिया। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेसलर जो कि फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सिविल सर्विसेज डे। अगर यहाँ पर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। Next, mention the hospital that was ranked 97th in the 2024 edition of the world's best hospital ranking in April 25 conducted by Newsweek magazine in collaboration with Statistica Incorporation। तो उस हॉस्पिटल का नाम बताओ। वो है एम्स दिल्ली, राइट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। इनको रैंक किया गया 97th इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग इन अप्रैल। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2025 इंडिया ने सरपास किया चाइना को विद अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स। तो 82 रामसर साइट्स के साथ यहाँ पे इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया क्रूज ऑपरेशंस फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एट बेलाड पियर इन महाराष्ट्र। पूछा जा रहा है, मेंशन द पोर्ट फॉर विच इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स वर्थ 5,700 करोड़ रुपीज वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो कौन से पोर्ट के लिए? वो है वाधवन पोर्ट के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंडक्ट किया इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन कोलैबोरेशन विद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यूजिंग अ 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर इन अप्रैल। इससे कम्युनिकेशन हमारी बेटर होती हुई दिखेगी एंड क्वांटम फील्ड में इंडिया की रिसर्च इससे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द एज अबव विच माइनर्स को अब अलाउ कर दिया गया है RBI के द्वारा कि वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं,
सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को वो कर सकते हैं। तो 10 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स ये काम कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इन अप्रैल विच होली ऑन सब्सिडरी फॉर टाटा सन, इन्होंने 750 मिलियन यूरोज या फिर 990.79 मिलियन डॉलर का 2 ईयर का ब्रिज लोन साइन किया टू कंस्ट्रक्ट यूके का लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटी। देखो ये जो ब्रिज लोन होता है ये क्या होता है बेसिकली, ये पहली चीज़ तो याद रखेंगे, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल एक नई चीज़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मान लो आपने ये खरीद लिया एंड आप इसको बेच रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें जो पैसे की फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आपका ब्रिज लोन, राइट। एंड किसको लिया है, किसने लिया है, एग्रेतास एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये ब्रिज लोन लिया गया है। यहाँ पे ये 2 साल के लिए लिया गया है ताकि इस यूके की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025वां एडिशन ऑफ द वाइजडेंस क्रिकेटर्स एल्मनैक रिवील्ड द 5 वाइजडेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई, इसमें से वो क्रिकेटर्स में से वो कौन से नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इनमें से हैरी ब्रुक वो नहीं है, बाकी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डैश एमर्ज एज द इंडियाज 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड हिट विद $43 बिलियन। तो यूएई नहीं आई करेक्ट, सऊदी अरेबिया इंडिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया विद $43 बिलियन ट्रेड। एंड इवन अभी जब पहलगांव अटैक हुआ था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की ही विजिट पे थे, फिर वहाँ पे वो कट शॉर्ट करके अपने विजिट को इंडिया आए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि 2/800 का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया जा सके एट चंद्रापुरा थर्मल पावर स्टेशन इन झारखंड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड एंड 16,500 करोड़ की लागत से इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। Now let's move to the homework section, students. First question is name all the states that has achieved 100% in literacy under Ullas initiative. Second question, tell me recently an application was launched on the World Emergency Day by AIMS Bhopal. They have launched an application. Name that application. Then third question, tell me recently India has been elected to the UN ECOSOC, right? That is Economic and Social Council. Your homework is to tell me the term, the duration here for the India's election to this organization. Fourth question, tell me recently 5GTAL. This is the branch that has been opened by which bank in Kolkata, West Bengal. And fifth question, students, tell me various organizations such as your SBI, such as your RBI, OECD, Fitch ratings, right? By all of them, what is the projection that we are seeing for FY26, right? So all these are important questions and I need to see maximum participation from all the students watching this video.